welcome to the channel. So today we are going to start the Eduteria from the month of August 2024 to July 2025. Now this is the latest Eduteria series now, which is very much important for the BPSC examination as well as very relevant for the UPSC examination. So let us start with the national Fatafat 100 news. Okay, so talking about the national, let's see. Which state became the first in the country to present a handwritten budget? So it was छत्तीसगढ़. Also एक बात याद रखना, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड तिमोर पिंगला गुरु घासीदास नेशनल पार्क, नया नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ का. What is the first AI news anchor name from Assam to be presented at the national level? The name is Ankita. Which is India's first non-banking financial company in the maritime sector? This is the Sagarmala Finance Corporation Limited, which was inaugurated by Sarbananda Sonowal. In which city will India's first quantum valley be established? It is Amravati, Andhra Pradesh, which has been included as the India's 44th UNESCO World Heritage Site. So it was the 12 Maratha military landscape. Which is the first police station in the country to receive an ISO certification from the Bureau of Indian Standards? This is the Arthunkal police station of Kerala. Which state of India announced 35% reservation in government jobs for native women? This is Bihar. Next is, where has been India's first wooden Gurdwara opened? Fazilka in Punjab. Which state started Aadhaar-based face authentication for ration distribution in the public distribution system? This is Himachal Pradesh. Which became the first state in India to implement yoga policy on the occasion of International Yoga Day? This is Uttarakhand. एक बात और ध्यान रखना, International Yoga Day celebrated on 21st of June and इस साल का International Yoga Day was celebrated in Visakhapatnam. Okay, ये दो facts और important है, इसको ध्यान में रखना. Who became the first woman from the CISF to climb Mount Everest? This is Geeta Samhita. Country's first expressway to have night landing facility for fighter jets is Ganga Expressway. Country's first semi-automated international port inaugurated by PM Modi in Vizhinjam, Kerala. And it is important. ये question आ सकता है exam में. Next is, which state has became the first state to launch the first AI-powered real-time forest alert system? This is Madhya Pradesh. Which state became the first in the country to establish Department of Future in Budget? Important है, ठीक है. This is the state of Haryana. Also एक बात याद रखना, हरियाणा has become the first state to acquire all the 22 crops at MSP. Okay. इसके अलावा constitutional park जो है that has also been established in Haryana, OP Jindal University in Sonipat. Okay, understood? Now next is the first state in the country to implement the scheduled caste subcategorization is Telangana. Which state became the first in the country to achieve full digital literacy is Kerala. Now Ullas scheme के अंडर the first state to achieve the full literacy level is Mizoram. ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है. सेकेंड स्टेट गोवा है एंड थर्ड स्टेट की मैं बात करूँ दैट इज त्रिपुरा अंडर द उल्लास स्कीम, ठीक है. Where has been the country's first prototype fast breeder reactor established? So this is going to be established in Kalpakkam, Tamil Nadu. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बिहार का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट विल बी इनाग्रेटेड इन नवादा में बनने वाला है ये. एंड दिस इज़ अ स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर, ठीक है, SMR रिएक्टर है, ये भी ध्यान रखना. इन विच स्टेट कंट्रीज फर्स्ट AI स्कूल वॉज लॉन्च्ड? इट इज़ केरला. वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट परमानेंट कलाग्राम बी इस्टेब्लिश? इन प्रयागराज, उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट है, इन विच स्टेट विल इंडिया फर्स्ट असेंबली इक्विप्ड विद ट्रांसलेटर फैसिलिटी बी इस्टेब्लिश? ये उत्तर प्रदेश में इस्टेब्लिश होने वाली है. इन विच स्टेट इज इंडियाज फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी बीइंग इस्टेब्लिश टू प्रमोट AI एजुकेशन, रिसर्च एंड इनोवेशन? दिस इज़ महाराष्ट्र. तो AI यूनिवर्सिटी फर्स्ट कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है. फर्स्ट में बात करूँ अगर AI एंकर्स की, AI एंकर अभी हमने पढ़ा था, ये असम के हैं, ठीक है. एंड AI स्कूल की मैं बात करूँ तो अभी हमने देखा था AI स्कूल कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ था. सो ये केरला में हुआ था. कंफ्यूज मत करना ऐसे पॉइंट्स में. नेक्स्ट इज, वेयर हैज़ बीन इंडियाज़ फर्स्ट ओपन आर्ट वॉल म्यूजियम इनॉग्रेटेड? इन मौसम भवन, न्यू दिल्ली. विच सिटी सेलेक्टेड एज द सेकेंड कैपिटल ऑफ असम? दिस इज डिब्रूगढ़. Where will the country's largest textile park be built at a cost of 300 crore rupees? So this is Lucknow.
Which state became the first in the country to bring global capability center, that is a GCC policy? ये है मध्य प्रदेश. Who became the youngest woman in the world to climb the 7 highest peak of the 7 continents? This is Kamya Karthikeyan and she belongs to Mumbai. Where is the world's largest data center being built by Ambani Group? Jamnagar in Gujarat. Next, where will the first quantum computing village of the country will be built on 50 acres? So in Amravati, Andhra Pradesh. Who inaugurated India's first bio-bitumen-based national highway stretch on NH44 at Manesar in Nagpur, Maharashtra? So it was inaugurated by Union Minister Nitin Gadkari. Where Uber launched its Asia's first water transport service? So it in Dal Lake, Jammu and Kashmir. Where will the Northeast India's first skill university be established? In Assam. Which city is chosen for India's first Google Safety Engineering Center? This is Hyderabad. Which state ranked first in the country to benefit from One Nation One Card? This is Bihar. Next, in which two languages President Draupadi Murmu released the copies of the Constitution of India? In Sanskrit and Maithili, and this becomes important. Next है, when will India's own space station be ready? So ये ready हो जाएगा by the year 2035. Where is country's first magnesium pilot plant being established? It is being established in the CSIR, Council of Scientific Research, National Meteorological Laboratory in Jamshedpur. Where has been country's first artificial intelligence based Anganwadi Center inaugurated? ये हुआ है गाजियाबाद in Uttar Pradesh. Where President Draupadi Murmu inaugurated the Swami Vivekanand Vidya Mandir School in Silvassa in Dadar and Nagar Haveli, Daman and Diu. Where has been India's first Constitution Museum? अभी मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशन पार्क, सॉरी मैंने बोल दिया था. इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम जो कि इनॉग्रेट हुआ है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में. एंड वही मैं बात करूँ कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क की, सो ये इनॉग्रेट हुआ है पुणे में. ठीक है. नेक्स्ट है, वेयर हैज़ द 18th प्रवासी भारतीय दिवस दैट इज़ PBD 2025 कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज? ये वो हुआ है ऑर्गेनाइज भुवनेश्वर में. नेक्स्ट है, Where has the world's first mixed typhoid vaccine developed to eliminate typhoid? इंडिया में डेवलप हुई है वैक्सीन. Where has the country's first FM radio station named Panchshul Pulse launched? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में लॉन्च हुआ है ये. Next, who became the first woman in India to obtain an electronic personal license? So this is Ishita Bhargav. International news की बात करें तो which country became the world's first largest creditor? So this is Germany. Which city became the most expensive city in the world? This is Monaco. In which country the world's first human bladder transplant was performed? It was performed in United States of America. Which country built the world's first 3D printed railway station? This is Japan. Also, first wooden satellite की मैं बात करूँ which is known as Lingosat. So ये भी जापान ने ही बनाया है. ठीक है, ये भी फैक्ट आप ध्यान रखना. Which passenger train in Pakistan hijacked by the Balochistan Liberation Army? So this was the Zafar Express. Which country became the first in the world to criminalize AI generated child sexual abuse material? This is the United Kingdom. Okay. Next देखते हैं. In which city the largest Hindu temple in the southern hemisphere was inaugurated? It is in Johannesburg, South Africa. Who took oath as the 50th Vice President of the United States? This is J.D. Vance. Which bird designated as the national bird of the United States? This is bald eagle. In which city the world's longest Mithila painting was created? It was created obviously in Madhubani. Who became the youngest mountaineer in the world to conquer all the 14 highest peaks? This is Nima Rinpoche of Nepal. Which country declared the world's first leprosy-free nation? This is Jordan. Which country became the first Southeast Asian nation to legalize the same-sex marriage? This is Thailand. Which country became the first to officially recognize the Taliban government in Afghanistan? ये है रशिया. Where have been the world's largest gold reserve found? This is in Hunan province in China. Okay, ये समझ आ गया. अब चलते हैं हम साइंस एंड टेक वाले पोर्शन पे. Where was India's first equine disease free compartment RBC center established? In Meerut cantonment. Where was the world's first non-binary AI chip launched? In China. Who designed and developed India's first trainer aircraft Hansa 3? It was done by CSIR National Aerospace Laboratories. In which city the human robot half marathon was organized? In Beijing, China. Next है हमारा
After the Philippines, which country became the second to make a deal with India for the BrahMos missile? It was Indonesia. Which country conducted its first human gene therapy trial for hemophilia? This is India. Next, which state government announced the launch of its own satellite named AssamSat? This is the government of Assam. With whose assistance IIT Madras started the India's first Hyperloop test track on its campus? This is the Indian Railways. Next है हमारा, who became the first Indian astronaut to operate a mission to the International Space Station under the Axiom 4 mission? This is Subhanshu Shukla. Which private company became the first in India to see reserve jobs for Agniveer? This is the Indo-Russian joint venture BrahMos Aerospace Limited. Important हो जाता है, ठीक है. BrahMos Aerospace Private Limited फर्स्ट कंट्री बनी है टू रिजर्व द जॉब फॉर अग्निवीर. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. Who announced the development of India's first indigenously developed semiconductor chip in the state of Gujarat? This is obviously Ashnavi Vaishnav. Under which mission Sunita Williams traveled to International Space Station? This is the Boeing Starliner mission. What is the name of country's first indigenously developed antibiotic drug? This is the Nafithromycin. Who inaugurated the country's first geoscientist museum? This is the Vice President Jagdeep Dhankar. Which country launched the world's first hybrid quantum supercomputer that is DME? This is the Japan. When is the launch of Shukrayaan mission 1 scheduled? It is scheduled in 2028. What is the name of India's first pesticide resistant bodysuit? This is Kisan Kavach. Where has been India's first geoscience museum inaugurated? This is in Gwalior. Which country became the first in the world to develop genome edited rice varieties? This is India. Let's now see some of the environment and ecology questions. What percentage of India's land area is covered by forest? This is 21.76%. Next up, where was the first tagging of India's national aquatic animal, the Ganga dolphin, conducted? It was conducted in Assam. Which airport became India's first zero waste airport? And this is an important question indeed. This is the Ahilyabai Holkar Airport of Indore. Which country became the first to adopt 100% electric vehicles? This is Norway. Which has been declared as India's first butterfly sanctuary? This is the Aralam Wildlife Sanctuary in Kerala. Where has been the India's first off-grid green hydrogen plant started? It has started in Kutch, Gujarat. Which country became the first in the world to define green steel by releasing a green steel taxonomy? This is India. Next is, which country ranks first in the energy production? This is China. Top wind energy producing states are Gujarat, Karnataka, Tamil Nadu, and this is very much important. Very, very important. Wind production में Gujarat, Karnataka, Tamil Nadu, this is the correct order. Where was India's first automated biomedical waste conversion system developed? It was developed in AIMS Delhi. Now sports related. Where is the world's first high altitude para sports center established? In Leh Ladakh. Where is the country's longest golf course built? It is built in Delhi. Who became the second and the youngest Indian to win the World Chess Championship? This is D. Gukesh. The first one was Vishwanathan Anand. And D. Gukesh ने किसको हराया था? मैग्नस कार्लसन ऑफ नॉर्वे. मैग्नस कार्लसन को हराया था. ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है. In which cities of Bihar the Khelo India Youth Games were organized? So 5 cities है, नाम याद रखना. राजगीर, पटना, भागलपुर, बेगूसराय एंड गया. Who became the 11th cricketer to be inducted into the ICC Hall of the Fame? This is Mahendra Singh Dhoni. Next, what is the new name of the annual historic test series between India and England? This is the Anderson Tendulkar Trophy. Where will the ICC Women's Cricket World Cup of 2025 be hosted? ये host होगा India and Sri Lanka में. Royal Challengers Bengaluru became the winner of which edition of IPL? This is the 18th edition. Next, IPL 2025, in how many balls did Vaibhav Suryavanshi become the scorer's century and make history? So 35 balls. What is the longest javelin throw by Neeraj Chopra? तो 90.23 meters का यहाँ पे थ्रो था इन दी दोहा डायमंड लीग. ओके. नाउ नेशनल फेस्टिवल्स की मैं बात करूँ दैट वर ऑर्गेनाइज्ड इन 2024. बोनालू फेस्टिवल इन तेलंगाना, लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, खीर भवानी फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर, अंबुबाची मेला वी ऑल नो इन गुवाहाटी असम, शिरुई लिली फेस्टिवल इन मणिपुर, त्रिशूरपुरम फेस्टिवल इन केरला, पुष्कर कुंभ इन उत्तराखंड, सरस्वती पुष्करालु कुंभ इन तेलंगाना, नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल इन मिजोरम, रम्मम फेस्टिवल इन उत्तराखंड,
चिराउबा फेस्टिवल इन मणिपुर, सारहुल फेस्टिवल इन झारखंड, एप्रिकॉट ब्लॉसम इन लद्दाख, जत्रा फेस्टिवल इन त्रिपुरा। और दिस जत्रा फेस्टिवल इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको लगेगा कि ये बिहार साइड का है, बिहार यूपी साइड का है, बट ये नहीं है, दिस इज़ इन त्रिपुरा। खोंगजोंग फेस्टिवल मणिपुर, माधवपुर घेर फेयर इन गुजरात, जदया स्वामी फेस्टिवल इन तमिलनाडु, चापारकुट इन मिजोरम, अत्तुकल पोंगल फेस्टिवल इन केरला, शिग्मो फेस्टिवल इन गोवा, न्योकुम यूलो फेस्टिवल इन अरुणाचल, हैरत फेस्टिवल इन जम्मू कश्मीर, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला इन फरीदाबाद हरियाणा, थाई पूसम फेस्टिवल तमिलनाडु, सांबर फेस्टिवल राजस्थान, फ्लेमिंगो फेस्टिवल इन आंध्रा, पंगसाउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल इन अरुणाचल प्रदेश, इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल इन बेंगलुरु। एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिव्य कला मेला 23rd वडोदरा गुजरात, 22nd दिव्य कला मेला इन न्यू दिल्ली, इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर इन मध्य प्रदेश, बोडोलैंड फेस्टिवल इन न्यू दिल्ली, इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है फ्लाइंग फेस्टिवल इन जुगा हिमाचल प्रदेश, गंगा फेस्टिवल इन हरिद्वार, इंटरनेशनल इंडिया डांस फेस्टिवल इन दिल्ली, मेरा हो चोंगबा फेस्टिवल इन इम्फाल मणिपुर, 21st दिव्य कला मेला इन जबलपुर, थिरुवोनम फेस्टिवल इन केरला, जांस्कर फेस्टिवल इन लद्दाख। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। प्रोसीड करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स पे। ठीक है, नाउ यूनियन बजट की बात करते हैं। किसको कोट किया गया था? कोटिंग द फेमस स्टेटमेंट ऑफ द ग्रेट तेलुगु पोएट देश मारते मनुष्योई, मीनिंग अ कंट्री इज़ नॉट जस्ट अ सॉइल, अ कंट्री इज इट्स पीपल। ठीक है, 6 ब्रॉड प्रिंसिपल्स थे, सब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताऊंगा, एंड रेस्ट यू कैन रीड। ठीक है, पॉज करके। 0 पॉवर्टी है। ठीक है, इसके अलावा 100% गुड क्वालिटी स्कूल एजुकेशन, एक्सेस टू हाई क्वालिटी अफोर्डेबल कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, देन है 100% स्किल लेबर विथ मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट, 70% इन वुमेन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, फार्मर मेकिंग आवर कंट्री द फूड बास्केट ऑफ इंडिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा टोटल बजट प्रेजेंट कितना हुआ था? 50.65 लाख करोड़ का। रेवेन्यू रिसीट थे 34,20,000 एंड दिस इज 16,44,000 करोड़। डेफिसिट की मैं बात करूँ, 4.8% था फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट था 1.9%, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट था 1% एंड प्राइमरी डेफिसिट था 1.3%। ठीक है, एक बार आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे बजट स्पीड सेक्शन ए में 4 इंजन्स बताए गए हैं ऑफ द इकोनॉमी। फर्स्ट वन वाज एग्रीकल्चर, सेकंड वन वाज एमएसएमई, तीसरा एक्सपोर्ट एंड चौथा इन्वेस्टमेंट। अब एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट स्कीम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ठीक है, दैट इज़ डेवलपिंग एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। 100 डिस्ट्रिक्ट्स कवर होने वाले हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी लो है, लो क्रॉप सोइंग है एंड बिलो एवरेज क्रेडिट नॉर्म्स हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू इंक्रीज प्रोडक्शन, अडॉप्ट क्रॉप्स डाइवर्सिफिकेशन, इंक्रीज पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज, इंप्रूविंग इरीगेशन फैसिलिटीज एंड फैसिलिटेट अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है, 1.7 करोड़ फार्मर्स को हेल्प करने का इसका ऑब्जेक्टिव है। रूरल प्रोस्पेरिटी एंड रेजिलियंस के लिए है। आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, कैसे? सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए एडिबल ऑयल में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट करा है नेशनल एडिबल ऑयल मिशंस। ठीक है, 6 ईयर मिशंस लॉन्च करने वाली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज मिशन ऑन सेल्फ सफिशिएंसी पल्सेस, जिसमें स्पेशल फोकस होने वाला है तूर, उड़द एंड मसूर दाल पे। नाउ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के लिए भी है। मखाना बोर्ड विल बी स्टैब्लिश इन बिहार, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा मखाना बोर्ड के अलावा देयर इज़ एन टर्मरिक बोर्ड। ठीक है, टर्मरिक बोर्ड जो है निज़ामाबाद इन तेलंगाना, ये ऑलरेडी इनॉग्रेट हो चुका है। ठीक है, नेशनल हाई सीड मिशन विल बी इम्प्लीमेंटेड, आप देख सकते हैं इसलिए इम्प्लीमेंट हुआ है। फिशरीज इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिशरीज़, यहाँ से आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। एंड वैल्यू जो है सी फूड एक्सपोर्ट्स की वो 60,000 करोड़ एम की जा रही है। ओके, अब फिशरीज़ हैं ऑब्वियसली तो कोस्टल एरियाज़ पे ज़्यादा ध्यान है, लाइक अंडमान एंड लक्षद्वीप, टू प्रमोट सस्टेनेबल फिशिंग फ्रॉम डीप सीज। कॉटन प्रोडक्टिविटी पे भी ध्यान है, दैट इज़ वाई 5 ईयर कैंपेन जो है वो लॉन्च होने वाला है। अब इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम की मैं बात करूं तो किसान क्रेडिट कार्ड में जो लोन की लिमिट पहले 3 लाख थी, दैट हैज़ बीन इंक्रीज टू 5 लाख। ना अगर मैं सेकंड इंजन की बात करूं, दैट इज़ द मीडियम, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। सो पहला इंजन हमने देखा दैट वाज एग्रीकल्चर, सेकंड हमारा एमएसएमई सेक्टर है। ना
Finance Minister described 5.7 crore MSMEs as second powerful engine as they contribute 45% to our export. ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकते हैं कि MSMEs कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, तो दे कंट्रीब्यूट 45%. ओके, नाउ क्रेडिट गारंटी कवर मिलने वाला है माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज को. यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी क्या रिवाइज क्राइटेरिया है फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम. अब इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं तो अब रिवाइज क्राइटेरिया 2.5 है इन्वेस्टमेंट के लिए एंड टर्नओवर शुड बी 10 करोड़. स्मॉल के लिए इसका हम 10 टाइम्स कर देंगे 2.5 का, दैट इज़ 25 करोड़, एंड इसका भी हम 10 टाइम्स कर देंगे, दैट इज़ 100 करोड़. अब मीडियम में क्या करेंगे, हम 5 टाइम्स कर देंगे, 25 का 5 टाइम्स इज़ 125 करोड़ एंड 100 का 5 टाइम्स इन इज़ 500. अब आपको सबका अलग याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये समझ लेना पहले का 2.5 है, दूसरे का 10 है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, ये बन गया 25 एंड 100. ठीक है, ये हमारा माइक्रो का है, ये हमारा माइक्रो का है, ये हमारे स्मॉल का है. एंड देन मीडियम के लिए क्या करना हमें, अगेन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 एंड 500, ये मीडियम का क्राइटेरिया आ गया. ठीक है, सो इंटू 5 इंटू 10 याद रखना, इंटू 10 फर्स्ट स्टेप में एंड इंटू 5 सेकेंड स्टेप में आपका कवर हो जाएगा सारा. ओके, नाउ अब है स्टार्टअप्स के लिए अलग से अनाउंस किया गया है 10,000 करोड़ का कॉर्पस. फर्स्ट टाइम अ न्यू स्कीम लॉन्च की जाने वाली है फॉर एंटरप्रेन्योर्स वर्थ 5 लाख इंक्लूडिंग वुमेन SC/STs. ठीक है, फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर फुटवेयर एंड लेदर के लिए एक नई पॉलिसी मतलब बनाने का प्लान है. गवर्नमेंट विल सेटअप ए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन. एम क्या है, मेक इन इंडिया. थर्ड है हमारा इन्वेस्टमेंट. पहला क्या था, एग्रीकल्चर, दूसरा था MSME, तीसरा है इन्वेस्टमेंट. अब इन्वेस्टमेंट इन पीपल है, इकोनॉमी है एंड इनोवेशन है. ठीक है, अब पीपल में इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, थ्रू सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0 स्कीम. ओके, अटल टिंकरिंग लैब 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स दैट इज़ गोइंग टू बी स्टैब्लिश बाय नीति आयोग, ये भी इस्टेब्लिश करने का प्लान है. भारत नेट प्रोजेक्ट दैट इज़ फॉर द ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ये ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स को प्रोवाइड किया जाएगा. भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम टू प्रोवाइड डिजिटल बुक्स इन इंडियन लैंग्वेजेस फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन. अब 5 नेशनल स्किल एक्सीलेंस सेंटर्स विल बी इस्टेब्लिश्ड. ठीक है, उसके बाद में एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ IITs, ये भी प्लान में है. देन अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल एजुकेशन, 500 करोड़ का अलॉटमेंट इसके लिए होगा. मेडिकल एजुकेशन भी एक्सपेंड की जाएगी. एंड सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को डे केयर कैंसर सेंटर के तौर पे दे हैव प्लान टू डेवलप दैम. PM स्वनिधि स्कीम को रिवैम्प किया जाएगा विद इनहांस्ड क्रेडिट फ्रॉम बैंक, UPI लिंक क्रेडिट कार्ड विद अ लिमिट ऑफ 30,000. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को एक्सटेंड किया जाएगा गिग वर्कर्स को दैट वर्क्स ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इशू देम आइडेंटिटी कार्ड्स एंड रजिस्टर्ड देम फॉर द ई श्रम पोर्टल. ओके, अब इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी की बात करूं, सो इसमें निर्मला सीतारमन जी ने स्टेट किया है कि PPP दैट इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे ये डिपेंड होगा. एसेट मोनेटाइजेशन प्लान ऑफ 2025 to 30 वाज लॉन्च, जिसमें फर्स्ट एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 10,000 करोड़ के साथ सेकंड एसेट मोनेटाइजेशन प्लान जो है दैट इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड. नाउ जल जीवन मिशन विल बी एक्सटेंडेड अंटिल 2028, इंपॉर्टेंट है, विच इज़ टू अचीव 100% कवरेज. ठीक है, इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन. न्यूक्लियर एनर्जी मिशन पे मैंने आपको बताया स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बिहार में इट इज़ गोइंग टू बी स्टैब्लिश. इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है. मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड का कॉर्पस 25,000 करोड़ है, ये ध्यान में रखना है. एंड रिवाइज उड़ान स्कीम विच इज़ रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग एयर ट्रांसपोर्ट इन Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़. Tier 2 एंड Tier 3 सिटी में ये सर्विस प्रोवाइड की जाएगी. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बिहार में इस्टेब्लिश होने वाले हैं. ठीक है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पटना में ओपन होगा एंड ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बीटा में. वेस्टर्न कोसी कनाल प्रोजेक्ट इन मिथिलांचल, ठीक है, फॉर इरिगेशन पर्पसेस. स्वामी फंड 2 दैट इज स्पेशल विडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिडिल इनकम हाउसिंग. स्वामी फंड जिसमें 50,000 हाउसिंग यूनिट हैव बीन कंप्लीटेड टू डेडिकेटेड हाउसिंग विडोज के लिए. नेक्स्ट इज इन्वेस्टिंग इन इनोवेशन, PM रिसर्च फेलोशिप स्कीम. Second gene bank with 10,000 lakh germplasm will be established for food and
न्यूट्रिशन, नेशनल जियो स्पेशियल मिशन डेवलप की जाने वाला है। एंड देयर इज़ एक्सपोर्ट में इनोवेशन। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन इज गोइंग टू बी स्टैब्लिश। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज भारत ट्रेड नेट विल बी सेटअप फॉर इंटरनेशनल ट्रेड्स। इंडस्ट्री 4.0 का एडवांटेज लेना है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इंडस्ट्रीज। नाउ रिफॉर्म एज अ फ्यूल, रिफॉर्म्स क्या क्या हैं? विवाद से विश्वास स्कीम, वही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर में दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज फ्रॉम 74% टू 100%। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर बैंक रूरल क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क को डेवलप करेंगे टू मीट द क्रेडिट नीड ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स एंड द पीपल्स इन द रूरल एरियाज। ओके, नाउ नेक्स्ट है रेगुलेटरी रिफॉर्म की मैं बात करूँ, हाई लेवल कमेटी स्टैब्लिश की जाएगी फॉर द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स ऑफ स्टेट ये इस्टेब्लिश किया जाएगा। एंड मैकेनिज्म विल बी स्टैब्लिश अंडर द फाइनेंशियली स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, जो कि लीड करती है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, चेयरमैन होती हैं उसकी, ठीक है, जो कि इवैल्यूएट करेगा द इम्पैक्ट ऑफ करंट फाइनेंशियल रेगुलेशंस इन सपोर्टिंग इंस्ट्रक्शंस। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस की मैं बात करूं, जो कि बजट के सेक्शन बी में था। नाउ रैशनलाइजेशन ऑफ कस्टम टैरिफ स्ट्रक्चर, 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, ठीक है, टू प्रोवाइड मेडिकल रिलीफ इन रेयर डिजीज एंड कैंसर विल बी फुल्ली एग्जेम्प्टेड। एंड बाकी जो कैंसर्स की मेडिसिन हैं उस पर 5% जो है वो GST को लोअर कर दिया गया है। उसके बाद आप इसको पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, कैंसर वाला जो है वो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब डायरेक्ट टैक्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? न्यू टैक्स रिजीम। अब 12 लाख तक की इनकम जो है दैट इज़ नॉट टैक्सेबल, ठीक है। नेक्स्ट 0 से 4 लाख में 0% इंटरेस्ट है, 4 से 8 लाख में न्यू टैक्स रिजीम है, वो ओल्ड वाले का है। ओल्ड वाले में 12 लाख तक एग्जेम्प्टेड है। और 4 to 8 लाख पे 5% लगेगा, 8 to 12 लाख पे 10%, फिर 5% इंक्रीज़ करते जाओ। एंड अबव 24 लाख है अगर, तो 30% ये आपका लगने वाला है। TDS का रैशनलाइजेशन होगा। इंटरेस्ट डिडक्शन फॉर सिटीजन्स फॉर 50,000 से 1 लाख तक एक्सटेंड कर दिया गया है। दिस इज़ ऑल। अब मैं बात करूँ एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस स्कीम्स की, तो PM गरीब कल्याण अन्न योजना में सबसे ज़्यादा अमाउंट एलोकेट किया गया है। मनरेगा में 86,000 करोड़, जल जीवन मिशन में 67,000 करोड़ एंड PM किसान सम्मान निधि में 63,500। सबसे ज़्यादा किसी स्कीम को है तो वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। एक्सपेंडिचर की मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा डिफेंस सेक्टर में, देन रूरल डेवलपमेंट, देन एग्रीकल्चर, देन एजुकेशन, देन हेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक सर्वे। तो लेट्स सी द इकोनॉमिक सर्वे। नाउ लेट अस सी इकोनॉमिक सर्वे का पोर्शन। Now, the economic survey of 2024-25 was presented in Parliament by the Union Finance Minister Nirmala Sitharaman on 31st January. ठीक है, and it is presented one day before the normal budget. Now, economic survey, who prepares it? So, it is prepared by the Economic Division of the Department of the Economic Affairs under the guidance of V. Anant Nageshwaran, who is the Chief Economic Advisor of India under Ministry of Finance. The first economic survey was presented in 1950-51 and after 1964 it was presented a day before the general budget. अब कुछ important points about the economic survey है। जो interim estimates थे GDP growth के for the year 2023-24 was 8.2। important आपके लिए इस साल का है एडवांस एस्टिमेट क्या है, तो 6.4% GDP ग्रोथ रेट का है। फिजिकल डेफिसिट कितना था 23-24 में? इट वाज 5.6%। अब इंडिया की पोजीशन क्या है इन डिफरेंट सेक्टर्स? सो ग्लोबल सर्विसेज के एक्सपोर्ट में 7th रैंक है, सीमेंट प्रोडक्शन में 2nd रैंक है, कल्चरल एंड एंटरटेनमेंट सर्विस में 6th रैंक है, टेक्सटाइल एंड गारमेंट एक्सपोर्ट में 6th रैंक है, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में 8th रैंक है, फार्मा इंडस्ट्री में 3rd रैंक है, फॉरेक्स में 4th रैंक है, रेलवे नेटवर्क में 4th रैंक है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब मैंने आपको बताया GDP एट कांस्टेंट प्राइसेस इट ग्रू बाय 6.7% 5.4% इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो भी अगर आपको इसको पढ़ना होगा तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेट्स फेच द इम्पॉर्टेंट एरियाज फर्स्ट, जहाँ से क्वेश्चंस हमारे ज़्यादा बन सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे से 1 to 2 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नाउ इंडियाज़ प्रोमिनेंट ऑफिशियल्स की बात करें तो कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? TV सोमनाथन है। फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? विक्रम मिश्री।
एंड दिस नेम इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे इन्होंने ही जो पोस्ट ऑप प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इट वॉज डन बाय हिम ओनली. होम सेक्रेटरी इज गोविंद मोहन, डिफेंस सेक्रेटरी इज राजेश के सिंह, फाइनेंस सेक्रेटरी इज अजय सेठ, रेवेन्यू सेक्रेटरी इज अरविंद श्रीवास्तव. Principal Secretary to Prime Minister, and this is again important, that is Pramod Kumar Mishra. Principal Secretary to the Prime Minister, second one, the first one is Pramod Kumar Mishra, the second one is Shaktikant Das. Private Secretary to Prime Minister is Nidhi Tiwari. CAG of India is K. Sanjay Murthy, and he is the 15th CAG. Next is Controller General of Accounts, CGA, is S.S. Dubey. Chief Statistician of India is GP Samanta. Attorney General of India is R. Venkatramani. He is the 16th, and K.K. Venugopal was the 15th. Solicitor General of India is Tushar Mehta. Chief Justice of Supreme Court is B.R. Gavai, and he is the 52nd Chief Justice. Chairperson of Lokpal of India is Ajay Manikrao Khanvilkar. The Chief of Defence Staff is Anil Chauhan. Chief of Naval Staff is Dinesh Kumar Tripathi. Chief of the Air Staff is Amarpreet Singh. Chief of the Army Staff is Upendra Dwivedi. Who is the Chief Election Commissioner of India? He is Pryanesh Kumar, and the other election commissioners include Vivek Joshi and Sukhbir Singh Sandhu. Chief Information Commissioner of India is Hiral Samaria. The Chairperson of National Human Rights Commission is V. Rama Subramaniam. Chairman of the National Medical Commission is Abhijat Seth. Commissioner of the Central Vigilance Commission is Praveen Kumar Srivastava. Chairperson of Competition Commission of India is Ravneet Kaur. Chairperson of National Commission for Women is Vijaya Kishore Rahatkar. Chairman of UPSC Ajay Kumar. CBSE Rahul Singh. NTA के Director General is Pradeep Singh Kharola. SSC Chairman is S. Gopal Krishnan. Chairman of SEBI is Tuhin Kant Pandey. And Chairman of the 16th Finance Commission is Arvind Pangaria. Chairman of the 23rd Law Commission is Dinesh Maheshwari. Director of Vikram Sarabhai Space Center is Dr. S. Uni Krishnan Nair. Next है ISRO Chairman is T.V. Narayana. Okay. Also, he has also been made Secretary of the Department of the Space and the Chairman of the Space Commission. Next is DRDO Chairman is Sameer V. Kamath. Director General of ICMR is Rajiv Bahal. Principal Scientific Advisor is Ajay Kumar Sood. Chief Economic Advisor is V. Anant Nageshwaran. National Security Advisor is Ajit Doval. NSG Director General B. Srinivasan. NIA Director General is Sadanand Basant Date. CBI Chief is Praveen Sood. Joint Director of CBI is Zandra Kumar. IB Chief is Tapan Kumar Deka. ED Director is Rahul Naveen. CRPF Director General is Gyanendra Pratap Singh. ITBP Director General is Rahul Rasgotra. Raw Chief is Parag Jain. Governor of the RBI is Sanjay Malhotra. He is the 26th Governor. Deputy Governors are Swaminathan Janaki Raman, T.R. Shankar, M. Rajeshwar Rao, and Poonam Gupta. Chief Financial Officer of RBI is Sudha Balakrishnan. Chairman of State Bank of India is Challa Shri Nivasulu Shetty. CEO of Chairman of Railway Board is Satish Kumar, and he is the first Dalit Chairman. It becomes important. Next is CEO of UIDAI is Bhuvnesh Kumar. Sansad TV CEO is Rajit Puhani. CEO of Niti Ayog is BVR Subramaniam. Vice Chairman of Niti Ayog is Dr. Suman K. Beri. President of India is Draupadi Murmu, second woman and the first tribal President of India. Next is Speaker of 18th Lok Sabha, Om Birla. Pro-term Speaker of 18th Lok Sabha was Bharuthari Mehta. Leader of the Opposition in 18th Lok Sabha is Rahul Gandhi. Leader of the House in Rajya Sabha is JP Nadda. Deputy Chairman of Rajya Sabha is Harvansh Narayan Singh. Secretary General of Rajya Sabha is Pramod Chandra Modi. Secretary General of Lok Sabha is Utpal Kumar Singh. Public Accounts Committee Chairman is PC Venugopal. Estimates Committee Chairman is Sanjay Jaiswal, and Committee on Public Undertaking Chairman is Baijayant Panda. और नेशनल अपॉइंटमेंट की बात करें सो लालू प्रसाद यादव प्रेसिडेंट ऑफ आरजेडी, नवीन पटनायक प्रेसिडेंट ऑफ बीजू जनता दल, एस रमन प्रेसिडेंट ऑफ पीएफआरडीए, आलोक जोशी चेयरमैन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित
is the new Chief of Integrated Defence Staff. Air Marshal Narmadeshwar Tiwari is new Vice Chief of Air Staff. Dr. Poonam Gupta, Deputy Governor of RBI. Rajiv Memani, President of the Confederation of Indian Industry. C.S. Shetty, Chairman of Indian Bank Association. Mangilal Jat, Director General of the ICAR. Lieutenant General Dinesh Singh Rana, Commander-in-Chief for Andaman and Nicobar Command. T. Ravishankar, part-time member of 16th Finance Commission. Ashwani Lohani, Director of Prime Minister Museums and Library. S. Mahindra Dev, Chairman of the Economic Advisory Council to the Prime Minister. Santosh Yadav, Chairman of National Highway Authority of India. Harshvardhan Agarwal, new President of FICCI. Poonam Sharma is the President of FICCI Ladies Organization. Arvind Singh Sahni, new Chairman of the Indian Oil Corporation. R. Doraiswamy is Interim MD and CEO of LIC. Sailesh G. Mehta, Chairman of Fertilizer Association of India. Arun Srinivas is Managing Director of Meta in India. S. Somnath is Chancellor of Chanakya University in Bengaluru. Air Marshal Ashutosh Dikshit is Chief of Integrated Defence Staff. Justice Suryakant is Chairman of the NALSA. Srinivas Sanjay Gowda is the Justice of Gujarat High Court. Vipul Manubhai Pacholi is the new Chief Justice of Patna High Court, and this is important for the BPSC exam. Now Krishnan Vinod Chandran is former Chief Justice of Patna High Court, who is appointed as a Judge of Supreme Court. Vinod Singh Gunjial is the Chief Election Officer of Bihar. Mirabai Chanu, Chairperson of the Indian Weightlifting Federation Athletics Commission. Next है हमारा Ajay Bhushan Pandey, Vice President of Asian Infrastructure Investment Bank. Mayank Sharma is the Controller General of Defence Accounts. Anju Rathi Rana is First Women Law Secretary. Bahadur Singh Sagu is Chairperson of Athletics Commission of the Athletics Federation of India. Arvind Singh Sahni, new President of the Indian Oil Corporation. Parmesh Shivamani is Director General of the Indian Coast Guard. Shishir Sinha is First VC of Rajgir Sports University, and this is important. Anurag Garg is the Director General of the Narcotics Control Bureau. Devendra Kumar Upadhyay, Chief Justice of Delhi High Court. Dr. D.K. Sunil is Chairman and MD of HAL. Next is Sindhu Gangadharan is new President of NASCOM. Rajvinder Singh Bhati is Director General of CISF. Daljit Singh Chaudhary is the Director General of BSF. Amrit Mohan Prasad is Director General of SSB. Next is N.S. Raja Subramani is Deputy Chief of the Indian Army. Krishna Swaminathan is the Deputy Chief of the Indian Navy. Sanjay Bhalla is Chief of Personnel of the Indian Navy. Ravindra Kumar is Director of NTPC, whereas Sanjay Kumar Mishra is the first Chairman of the GST Appellate Tribunal. And this is important, ये पूछा जा सकता है आपसे. Now Devendra Jhachhadia is the new President of the Indian Paralympic Committee. Sanjay Nair is the President of ASSOCHAM. Narsimha Pancham Yadav is the Chairman of the Athletics Commission of the Wrestling Federation of India. Atanu Chakrabarti is the Chairman of HDFC Bank. Robert J. Ravi is the Chairman and Managing Director of BSNL. Professor Simon Mark is Vice Chancellor of India's first Artificial Intelligence University in Mumbai. Arun Bansal, CEO of Paytm Payments Bank. Manolo Marquez, Head Coach of the Indian Men's Football Team. Manoj Mittal is Chairman and MD of SIDBI. Chandrasekhan Gaurinathan Khadkar is the Chairman of Indira Gandhi Centre for Atomic Research Director. Kapil Dev is President of Professional Golf Tour of India. Nalin Negi is new CEO of BharatPe. Amitabh Chaudhary is new MD and CEO of Axis Bank. Manoj Panda is the member of 16th Finance Commission. Next है the first woman to be appointed to important position in India and the world. So let's see. Astha Punia is first female fighter pilot of Navy. Jennifer Simmons is the first female president of Suriname. Christy Coventry is first female and African president of the International Olympic Committee. Shirley Borchway is the first African female secretary general of the Commonwealth, and this is important. Yashasvi Solanki is first female naval officer to be appointed ADC to the President of India. This is also important. Next, Natumbo Nandi Nadaitwa is the first female president of Namibia. Dr. Ngozi Okonjo-Iweala is the Director General of WTO. The first woman in the world and the first African to be appointed at this post, ये है हमारी जो अभी हमने देखा Ngozi Okonjo-Iweala.
Claudia Sheinbaum, first female president of Mexico. Lieutenant General Sadhna Saxena Nair, first female DG of Indian Medical Service. Vice Admiral Aarti Sareen is the first female Director General of Armed Force Medical Service. Fateme Mohajirani is the first female DG of the Iran female government spokesperson. Judith Suminwa Tuluka is the first female Prime Minister of Congo. Justice Ritu Bahari is the first female Chief Justice of the Uttarakhand High Court. Naima Khatun is the first female VC of Aligarh Muslim University. Maryam Nawaz Sharif, first female Chief Minister of Punjab Province in Pakistan. Geeta Batra is the first female Director of World Bank Global Environment Facility. Suman Kumari is first female sniper of BSF. Rashmi Shukla is first female DGP of Maharashtra Police. Now, the words that are selected by various dictionaries. Cambridge Dictionary का word है manifest, Oxford का है brain rot, Collins का है brat and Merriam-Webster Dictionary का है polarization. Now, let's see about the international appointments. So, Robert Francis Prevost is the new Pope of the Roman Catholic Church, that is Pope Leo the 14th. Sukanya Sonowal, Commonwealth Youth Peace Ambassador. Annalena Baerbock is a former foreign minister of Germany and she was the president of the 18th session of the United Nations General Assembly. Now, Mohsin Naqvi is the new president of the ACC Cricket Council, Asian Cricket Council. Masato Kanda is the 11th president of the Asian Development Bank. Sumati Dharmavardhana is the chairman of Anti-Corruption Unit of ICC. Prakash Man Singh Raut is the new Chief Justice of Nepal. Mohammad Tayyab Ikram is the President of International Hockey Federation. Philmong Yang is the former PM of Cameroon. He is the President of 79th session of the United Nations General Assembly. Next है Kristalina Georgieva is the Managing Director of IMF for the second time. Next है Mark Rutte is the former PM of Netherlands, new Secretary General of NATO. Now, David Salvagini is the NASA's first AI officer, and this becomes important. Mukhtar Babayev is the president of COP19, which was held in Baku, Azerbaijan. Next, Dilma Rousseff is the president of BRICS Bank. Linda Yaccarino is the new CEO of Twitter, that is X. Mohsin Naqvi, new Home Minister of Pakistan. Asim Munir, new Army Chief of Pakistan. Neeraj Chopra, Friendship Ambassador of Switzerland. Dr. Tedros Ghebreyesus is the Director General of WHO. Catherine Russell is the new head of the UNICEF. Next is, let's now talk about appointment as the key positions of the world in the year 2024-25. Now, Madan B. Lokur, so he is the chairman of the United Nations Internal Justice Council. Kash Patel, Director of the FBI. Amitabh Kant, Senior Advisor of Canada-based investment company Fairfax. Dr. Srinivas Mukkamala is the first Indian origin president of the American Medical Association. Harvansh Chawla is the president of the BRICS Chamber of Commerce and Industry. Manish Singhal is Secretary General of ASSOCHAM. Shambhu Kumaran is the chairman of the 68th session of the United Nations Drug Control Commission. Jay Shah, new president of ICC. Next is Anita Anand, Foreign Minister of Canada and is the first Hindu woman. Sri Ram Krishnan is Senior Policy Advisor for AI at the White House Office of Science and Tech. Ashish Khanna, Secretary General of ISA. Sanjeev Kumar Singla, a new Ambassador of India to France. Ajit Vinayak Gupta, Ambassador to Germany. Anurag Srivastava, Ambassador to Mauritius. Shri R. Ravindra, Ambassador to Iceland. Swati Vijay Kulkarni, Ambassador to Algeria. Vanla Vana is Ambassador to Cambodia. Raja Randhir Singh, President of the Olympic Council of Asia. Mukteshwar Kumar Pardeshi is Ambassador to Turkey. Sunita William, Commander of International Space Center. Abhuday Jindal is the President of Indian Chamber of Commerce. Parvathaneni Harish is Permanent Representative of India to the United States and New York. Mohsin Naqvi, President of Asian Cricket Council. Jagjit Pavadia has been re-elected to the International Narcotics Board for the third time. Kamal Kishore is Special Representative
for UN disaster risk reduction. Geeta Sabharwal, UN resident coordinator in Indonesia. Purva Chandra, chairman of the committee at 77th World Health Assembly. Rakesh Mohan, appointed to the World Bank Economic Advisory Panel. Lisa Nandi is the Minister of Culture and Sports in UK. Vinay Mohan Kawatra is new ambassador to US. Now this is the president, prime minister of different countries. मैं इसको स्लोली स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं, क्योंकि लेट अस फोकस द मेन थिंग्स नाउ. ये तो अभी लेट्स टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट ऑबिटुअरीज. Important obituaries in the year 2024-25. Now, Girija Vyas is a former union minister and former chairperson of Women Commission. Manoj Kumar जो हैं, he was an actor and film producer. Won the Dada Sahab Phalke Award recipient in 2015. Salim Akhtar, Urdu news reader of All India Radio News Service. M.R. Srinivasan is a former chairman of Atomic Energy. Kumudini Lakhia is a renowned Kathak dancer. She was awarded with Padma Shri, Padma Bhushan and Padma Vibhushan in 2025. Pope Francis is a top religious leader of the Roman Catholic sect. Original name is George Mario Bergoglio. Ustad Ghulam Nabi Shah, famous Kashmiri folk singer known as Hamle Bulbul in the music world. Vijay Rupani, former Chief Minister of Gujarat from 2016 to 2021. Baba Shivnath is a spiritual guru, awarded Padma Shri in 2022. He died in Varanasi at the age of 128. K.V. Rabia is a social worker of Kerala. Raj Manchanda is a legendary squash player. Jodhaiya Bai is a famous Baiga tribal artist. Zakir Hussain, famous tabla player. He won the 5 Grammy Award winner. Mrs. Tulsi Gaura is known as the Tree Mother of Karnataka. Naveen Chawla is the former Chief Election Commissioner. Om Prakash Chautala is former Chief Minister of Haryana. Former Prime Minister Manmohan Singh, he died on 25th December 2024 in the age of 92 years. Okay, he was born on 26 September 1932 in Gar village of Punjab province. He was the 14th Prime Minister of India from 2004 to 2014. He was the Finance Minister of India between 1991 to 1996. Also, he was the leader of opposition in Rajya Sabha between 1998 to 2004. Jimmy Carter has been awarded the Padma Vibhushan in 1987. He was the 39th President of America. He was the President between 1997 to 1981. He also received the Nobel Peace Prize in 2002. Dr. K. Kasturi Rangan is a famous Indian space scientist, chairman of ISRO from 1995 to 2003, former member of Planning Commission, Padma Shri in 1982, Padma Bhushan in 1992 and Padma Vibhushan in 2000. Vivek Devroy, the chairman of Economic Advisory Council to the Prime Minister. Kiki Hakansan is the world's first Miss World. Sharda Sinha was the folk singer, also known as the Bihar Nightingale or Bihar Kokila, awarded with the Padma Shri in 1991 and Padma Bhushan in 2018. Ratan Tata was the former chairman of Tata Sons, awarded with Padma Bhushan in 2000 and Padma Vibhushan in 2008. Godavari Dutt was associated with Mithila painting. Sushil Kumar Modi, former Deputy Chief Minister of Bihar, first time बने थे 2005 में. He was elected from Patna Kumarar Assembly constituency in 1990. Elected unopposed to Rajya Sabha in 2020, posthumously was awarded the Padma Vibhushan of 2025. Now next is highest state honors which was received. तो नामीबिया का highest state honor क्या है? Most ancient Welwitschia mirabilis. And ये सारे awards PM मोदी को मिला है. ब्राज़ील का है Grand Collar of the Northern Order of the Southern Cross. ट्रिनिडाड एंड टोबैगो का है द ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो. घाना का है ऑफिसर ऑफ द घाना ऑफ द स्टार ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द घाना. साइप्रस का है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मकारियोस 3. श्रीलंका का है मित्र विभूषण. मॉरिशस का है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन. कुवैत का है द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर. गयाना का है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गयाना. बारबाडोस का है ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस. डोमिनिका रिपब्लिक का है डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर. नाइजीरिया का है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर.
रशिया का है द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंट्री द अपोस्टल। ग्रीस का है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर। फ्रांस का है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर। इजिप्ट का है ऑर्डर ऑफ नाइल। पापुआ न्यू गिनी का है ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगो। फिजी का है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी। पलाऊ का है ए बाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ। भूटान का है द ऑर्डर ऑफ ड्रग गैल्पो। लीजन ऑफ मेरिट यूएसए का बहरीन का है किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा। मालदीव्स का है रूल ऑफ निशान इजुद्दीन। यूएई का है ऑर्डर ऑफ जायद। पैलेस्तीन का है ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। अफ़गानिस्तान का है स्टेट ऑर्डर ऑफ द गाजी अमीर अमानुल्लाह खान। सऊदी अरब का है ऑर्डर ऑफ द किंग अब्दुल अजीज़। ओके, नाउ लेट अस सी फॉरेन विजिट्स ऑफ प्रेसिडेंट। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फॉरेन विजिट्स ऑफ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। प्रेसिडेंट का एक बार देख लो आप। इटली एंड वेटिकन सिटी इन अप्रैल के स्टार्टिंग में। पोर्तुगल एंड स्लोवाकिया 13 अक्टूबर 2024 में। अल्जीरिया, मॉरिशनिया एंड मलावी एंड 5 अगस्त टू 10 अगस्त फिजी, न्यूजीलैंड एंड तिमोर लेस्टे। अभी स्टेट इलेक्शंस की बात करें, असेंबली इलेक्शंस की, तो आंध्र प्रदेश में 175 असेंबली सीट्स हैं, जिसमें कि लार्जेस्ट पार्टी कौन सी थी? तेलुगु देशम थी, हु वॉन 135 सीट्स। ओडिशा के असेंबली सीट्स 147 है, भारतीय जनता पार्टी 78 में से जीती है। अरुणाचल प्रदेश 60 असेंबली सीट्स एंड भारतीय जनता पार्टी 46 सीट्स। सिक्किम में 32 एंड सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा वॉन 31 सीट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू। फॉर द 4th टाइम ही हैज़ बिकम। डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस पवन कल्याण। ओडिशा की मैं बात करूं तो मोहन चरण मांझी became for the first time the chief minister. Deputy chief minister है कनक वंदन सिंह एंड प्रावती परिदा। अरुणाचल प्रदेश CM is पेमा खांडू for the 3rd time and deputy chief minister is चाउना मीन। सिक्किम chief minister is प्रेम सिंह तमांग। Now change name of the places। गया का नाम अब गया जी हो गया है। सिल्कियारा टनल बाबा बौखनाग टनल। बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी डॉक्टर मनमोहन सिंह। फोर्ट विलियम्स एस विजय दुर्ग। कार्नक ब्रिज एस सिंदूर ब्रिज। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है गल्फ ऑफ मेक्सिको नेम्ड एज गल्फ ऑफ अमेरिका। पोर्ट ब्लेयर एस श्री विजयपुरम। पुणे एयरपोर्ट एस संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट। काकसर ब्रिज इन लद्दाख एस कैप्टन अमित भारद्वाज ब्रिज। सराय काले खां चौक इन दिल्ली एज बिरसा मुंडा चौक। दरबार हॉल एज गणतंत्र मंडप। अशोक हॉल एज अशोक मंडप। जोशीमठ नगर नेम्ड एज जोशीमठ। कोशिया कुतौली तहसील एज कैंचीधाम। अहमदनगर एज अहिल्या नगर। चिरंजीवी योजना ऑफ राजस्थान एज चीफ मिनिस्टर आयुष्मान आरोग्य योजना। अयोध्या रेलवे स्टेशन एज अयोध्या धाम स्टेशन। झेलम स्टेडियम एज जनरल बिपिन रावत स्टेडियम। फिरोजाबाद एज चंद्रनगर। आयुष्मान भारत हेल्थ सेंटर एज आयुष्मान आरोग्य मंदिर एंड ओल्ड पार्लियामेंट हाउस एज संविधान सदन। नाउ टॉकिंग अबाउट द साइक्लोन्स एंड स्टॉर्म्स। शक्ति टाइफून आया था बे ऑफ बंगाल में एंड नेम दिया था श्रीलंका ने। एल्फ्रेड आया था सदर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड नेमिंग किया था ऑस्ट्रेलिया ने। जूडे मडागास्कर एंड मोजाम्बिक नेम वॉज गिवन बाय मॉरिशस। नाउ चिल्दो इन मोजाम्बिक नेम दिया था मॉरिशस ने। रफेल इन क्यूबा नेम वॉज गिवन बाय फ्रांस। स्टॉर्म सारा इन हॉन्डुरस। टाइफून यागी इन म्यांमार, लाओस एंड वियतनाम एंड नेम वॉज गिवन बाय जापान। टाइफून कॉन्ग रे केम इन ताइवान एंड फिलीपींस नेम वॉज गिवन बाय कंबोडिया। डाना केम इन ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल नेम वॉज गिवन बाय कतर। असना कच्छ एंड सौराष्ट्र के रीजन में आया था एंड द नेम वॉज गिवन बाय पाकिस्तान। अभी मैं बात करूं MOUs की। सबमरीन कोऑपरेशन एग्रीमेंट इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। एग्रीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट पोलर रिसर्च व्हीकल इंडिया एंड नॉर्वे। MOU for zero carbon emission by 2070 enhancing cooperation in energy sector Denmark. Signing of MOU on Buddhist cooperation India and Vietnam. MOU on Ayurveda agriculture and culture India and Angola.
signing of agreement worth 63,000 crore for purchase of 26 Rafale marine fighter crafts between India and France. MOU for cooperation in lithium exploration and mining, India and Argentina. Implementation of quick impact project for the aim of socio-economic development, ये है India and Nicaragua. MOU enhancing logistic and infrastructure cooperation, India and South Korea. 450 million agreement for export of BrahMos supersonic missile, India and Indonesia. Trade in non-basmati white rice, India and Indonesia. Tackle the growth problem of space debris, Japan. Defense cooperation and military relations, India and Algeria. Training opportunities and information sharing offices of the Auditor General, India and Seychelles. Labor mobility and skill recognition, India and Germany. Rail transport, custom and investment, India and Spain. Semiconductor, digital technology, skill development and health, India and Singapore. Public administration and governance reform, India and Malaysia. Agriculture, medical and cultural cooperation with Ukraine. Green ammonia export with Japan. LNG infrastructure and power development between India and Sri Lanka. Enhanced cooperation on MSME, India and USA. Capacity building of 1,000 civil servant officer, India and Maldives. Maritime Heritage Complex at Lothal in Gujarat, it is India and Vietnam. Now next is new days which have been recently started. Ayurveda Day on 23rd September, Teachers Day on 3rd January, Meditation Day on 21st December, Namo Bharat Divas on 21st October, Hyderabad Liberation Day 17th September, Samvidhanatya Divas 25 June, International Day of Potato 30th May, Football Day on 25th May, Markho Day on 24th May. Markho is a screw horned goat, ठीक है. Basketball Day on 21st December, no non-match day 25th November, Space Day on 23rd August, Swatantra Veer Gaurav Divas 28 May, Samarpan Divas 11th Feb, National Dolphin Day 5th October, Maitri Divas 6th December, Startup Day 16th January, Parakram Divas 23rd Jan, Veer Bal Divas 26th December, Janjatiya Gaurav Divas on 15 November and Partition Orders Remembrance Day on 12th August. Next is the new brand ambassadors. Dettol Company, Mahendra Singh Dhoni. Karnataka Forest Department, Anil Kumble. Audi India, Neeraj Chopra. World Para-Athlete, Kangana Ranaut. Maldives, Katrina Kaif, Brand Ambassador of Maldives. Brand Ambassador of Federal Bank, Vidya Balan. Brand Ambassador of Tata Motors, Vicky Kaushal. Brand Ambassador of Fit India Icon, it is Ayushman Khurrana. Next is Brand Ambassador of Skechers, Jasprit Bumrah Kartik Aaryan. Brand Ambassador of India Gate Basmati Rice is Amitabh Bachchan. Brand Ambassador of Vicky Frames is Ayushman Khurrana. Puma India के PV Sindhu. Kho-Kho 2025 Salman Khan. Indian Cyber Crime Coordination Center Rashmika Mandhana. Ministry of Ports, Shipping and Waterways Manu Bhakar. एंड ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना. ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मध्य प्रदेश टूरिज्म, ये हैं पंकज त्रिपाठी. नेक्स्ट है थाईलैंड टूरिज्म डिपार्टमेंट सोनू सूद. फिट इंडिया मूवमेंट नरेंद्र कुमार यादव. फ्रेंच कार कंपनी सिट्रोइन के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी. मोटो GP इंडिया शिखर धवन. टोबैको कंट्रोल कैंपेन PV सिंधु. ग्रीन्स डे बेटर न्यूट्रिशन PV सिंधु. T20 वर्ल्ड कप युवराज सिंह, क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी एंड हुसैन बोल्ट. नेशनल एम्बेसडर फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेन बाय यूनिसेफ करीना कपूर. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हरियाणा इस मनु भाकर. बिस्लेरी फर्स्ट ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर इस दीपिका पादुकोण. SBI ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी. जियो मार्ट ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी. भारत पेट्रोलियम एम्बेसडर राहुल द्रविड़ प्लस नीरज चोपड़ा. रैंगलर ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंदाना. हर्ब लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया स्मृति मंदाना. त्रिपुरा टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली.
पंजाब नेशनल बैंक ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली एंड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ब्रांड एम्बेसडर इज़ दिया मिर्ज़ा। ना ये जो 18th लोकसभा है, दिस हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इन द स्पीडी बुक, आप वहाँ से देख सकते हो, रिपीटेशन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब डायरेक्टली लेट्स मूव टू द वेरियस प्रोडक्ट्स दैट रिसीव द जीआई टैग। नाउ गोवा की फैनी, राजस्थान की सांगरी बीन, केरला की कन्नड़ डिप्पया, मेघालय की रिंदिया सिंह सिल्क एंड खासी हैंडलूम, उत्तर प्रदेश का बनारसी सेनाई एंड बनारसी तबला, वेस्ट बंगाल नोलन गुडर संडेस, तमिलनाडु कुंबाकोनम बीटल रीफ, थोवालई फ्लावर गार्डन, तेलंगाना वारंगल चटपटा चिली, गुजरात का सौदगारी ब्लॉक पेंटिंग, असम का बोडो जौ जावरान, माइब्रा जौ बिडवी, बोडो जौ गिशी, नाफम ओंडला ग्वाखा नार्जी एंड अरोनई, उत्तर प्रदेश जागरी ऑफ शामली डिस्ट्रिक्ट, गुजरात का अंबाजी वाइट मार्बल एंड अजरक प्रिंट, महाराष्ट्र का सितार एंड तानपुरा फ्रॉम मिराज सिटी, उत्तर प्रदेश का काठिया बीट तिरंगा बर्फी एंड धौला स्टैट्यू मेटल स्कल्पचर, मध्य प्रदेश गोंड पेंटिंग एंड रतलाम रियावन गार्लिक, आंध्र प्रदेश का नरसापुर कॉचेट लेस क्राफ्ट, असम माजुली मास्क एंड माजुली मैनुस्क्रिप्ट, त्रिपुरा माताबाड़ी पेड़ा, रीसा रिग्नाई पचारा टेक्सटाइल, ओडिशा का सिल्वर तरकशी एंड सिल्वर फिलग्री। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का सांझी क्राफ्ट एंड लौंगलता एंड लाल पेड़ा, गुजरात का कच्ची खरीक ड्रेस, उत्तर प्रदेश का हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू। ओके, नाउ अपकमिंग गोल्स की बात करते हैं। अब अपकमिंग गोल्स वाला जो चैप्टर है, दिस विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्टडिंग।